how are you? I hope you all will be fine. So today we will do exercise of chapter 4 key elements of a democratic government of political science or civics. Okay, social and political life. So first question is, how would Maya's life be different in South Africa today? So the answer is, South Africa is a free country today. Maya can enjoy her life there as there now no discrimination now on the basis of color. All have equal rights. Okay. Now question number 2. What are the various ways in which people participate in the process of government? So the answer is, people can participate in the process of government today in many ways. First, by writing letters to editors. Second, by writing on social media. Third, by participating in elections. Fourth, by participating in mass protests. Fifth, by participating in debates on televisions. Okay, now question number 3. Why do you think we need the government to find solutions to many disputes or conflicts? So the answer is, government is equally important or required to find solutions to conflicts. If it would not be there, the conflicts will never be resolved and these conflicts will take the shape of violence. So, people should not be left over without government's interference. Now, question number 4. What actions does the government take to ensure that all people are treated equally? So the answer is, the government takes the following actions to ensure that all people are treated equally. First, all citizens are equal on the basis of caste, religion, gender, and economic status. Second, people of backward classes are given reservation in government jobs and colleges to make their status equal to others. Third, any act of discrimination against the untouchables is punishable according to the law. Now, question number 5. Read through the chapter and discuss some of the key ideas of a democratic government. आपको चैप्टर को पढ़ना है और डिस्कस करना है की आइडियाज़ के बारे में, ठीक है? की आइडियाज़ किसके? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, लोकतांत्रिक सरकार। मेक अ लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल पीपल आर इक्वल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि सभी पीपल्स जो हैं वो इक्वल हैं। सो सी द आंसर, all citizens are equal on the basis of caste, religion, gender and economic status. सारे citizens मीन्स होता है नागरिक, सभी नागरिक इक्वल हैं किन बेसिस पर? कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस पर, ठीक है। सेकंड, पीपल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस मतलब जो पिछड़ा वर्ग होता है ना, उनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, किन में? गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉलेजेस टू मेक देयर स्टेटस इक्वल टू अदर्स, है ना, उन्हें रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण मिलता है गवर्नमेंट जॉब में भी, कॉलेजेस में भी, ठीक है, कि वो अपना स्टेटस सभी के बराबर बना सकें। थर्ड, एनी एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल्स इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी अनटचेबल मतलब अछूत व्यक्ति से अगर के अगेंस्ट अगर कोई जाता है, ठीक है, तो वो पनिशेबल होगा, उसे सजा मिलेगी। ओके, सो हियर योर चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड। राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी।